Dear students, this is Saroj from Avision Institute. In today's class, let us discuss and analyze questions asked in SBIQ exam based on phrase replacement. So you should remember, phrase replacement is nothing but miscellaneous forms of concepts of grammar. So whatever you have studied to solve questions of error detections, the same concept will be repeated in phrase replacement also. So just let us see a few of the questions that are asked in recent years exams. One sentence says, although few outside academy have heard of him, today William Dane Howell is among America's most successful literary critics and novelists. And these are the options given. I will just minimize. So these are the options given, or as you know, they may underline it. They will underline certain parts like this. So when you read the options, it is very difficult to identify कि कौन सा ऑप्शन क्या है, उसको रेक्टिफाई कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है. रिमेंबर, यूजुअली एग्जाम में पंक्चुएशन का एरर नहीं रहता, लेकिन सम केसेस में देयर माइट बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पंक्चुएशन ऑफ एरर या रिप्लेसमेंट. So option B says, however difficult it may be to find someone. Option A, although few outside academy. ये पता ये this is not academy, ये academe है. It means the institutions, the environment and ambience of learners. This question is based on punctuation. Very rarely they've asked phrase replacement on punctuation. It means if punctuation is here, it says that today William Dean is among America's most successful literary. Are you getting it? It means they want to say कि nowadays वो क्या है most successful as a considered one. But this is not the fact. It means they want to say कि maybe today people are not aware. तो literally ऑप्शन ए में देखोगे जो पंक्चुएशन है टुडे के बाद है. इट मींस although few outside academy have heard of him today, William Dean Howells, and then it continues, is among the most. So if you say why this, why not option B? Remember, although is used for contrasting approach. यानी एक क्लास है पॉजिटिव होगा, सेकंड क्या होगा नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा. वन क्लास इज नेगेटिव, सेकंड क्लास इज पॉजिटिव. सो आउटसाइड लाइक वेरी फ्यू हैव हर्ड ऑफ हिम, इट्स अ नेगेटिव. लेकिन आउटकम क्या है, वह क्या है, अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल critics and novelists. Let us look at the next question, what they have asked. It says, देखो, I am trying to solve questions of the same pattern. It means same although के based का एक question था, how to replace that question. Next question भी क्या है, based on although है. इसको देखो उसमें कैसे प्रेजेंट किया है. यहाँ पे I believe like they may underline it. यहाँ पे they will underline this part, and this part will be replaced. Option दिया हुआ है, although the stock market seems to offer possibility of great personal gain. Again although है, तो although का concept अभी आपने क्या सुना, although is a contrasting approach. Contrasting मतलब one class will be positive, second class will be negative. So in first class you have great personal gain. Great personal gain क्या है? Something positive.
तो सेकेंड पार्ट में क्या है? रिस्क ऑफ फाइनेंशियल ruin. Remember, except is a stative verb. Except will not exist in continuous or progressive form. तो ये जो एक्सेप्टिंग है ना, एक्सेप्टिंग क्या है? ग्रामेटिकली इरेलेवेंट है, अनएक्सेप्टेड. तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए आल्सो कांट बी करेक्ट, क्योंकि ये ना स्टेटिव वर्ब को आईएनजी फॉर्म में कन्वे किया. अच्छा, अगेन सिंस द सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो ये आर एक्सेप्टिंग आर, ये क्या है? ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, नहीं कर सकते. नाउ you are left with the two option, option B and option C. Option B says is to accept the risk of financial ruin as well. Option C says it is to accept the risk as well as financial ruin. भाई as well as जो है ये ruin and financial risk, ये superfluous हो गया. One clause is in positive, second clause has to be negative. So when you read options B, it says is to accept the risk of financial ruin as well. It means one clause says personal gain, second clause says the risk as well. Sorry, second clause says risk of financial ruin. Risk of financial ruin. यहाँ पे देख रहे हो टर्म क्या है? Risk of financial ruin. That's why option B is appropriate to replace the questions that you have seen. इसको erase कर देते हैं. So now you have realized कि phrase replacement में the options जो होगा काफी identical similar होगा. कुछ और क्वेश्चन देखें. ये this option is of पूरा सा मिला. तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, they have given you multiple options. It means sometimes they give you single option, sometimes they give you multiple option. यहां पे देख रहे हो ये चीज क्या है? This is already bold. Bold का मतलब this part has to be replaced. You are given with options. Remember, so when you read the local administration claim that protesters are to ignore, हो सकता है कुछ एरर ना दिखे, but remember previous classes में I had discussed one concept called rule of parallelism. क्या बोला था? Rule of parallelism. Rule of parallelism says if sentence का एक क्लास past में है तो second clause past tense में ही हो. If one clause of a sentence is in present part, second part has to be in present only. है ना? This is called rule of parallelism. So when you look at the question, यहाँ पे first clause क्या है? Administration claim. Claimed क्या indicate कर रहा है? Past. But second clause में उन्होंने क्या यूज किया है? Protester are. क्या indicate कर रहा है? Present. It means this phrase is violating the rule of parallelism को violate कर रहा है. तो ऑप्शन में क्या करोगे? ऑप्शन में वही पार्ट सही होगा जहां पे पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है. ये आर है, नहीं हो सकता. हैव है, प्रेजेंट है. थर्ड ऑप्शन में इग्नोर्ड है. इग्नोर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? पास्ट को. तो वन क्लास इज इन पास्ट, सेकंड क्लास भी पास्ट में है. तो ऑप्शन ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ओनली थर्ड ऑप्शन सी में है. दिस विल रिप्लेस द गिवन फ्रेज. Remember, phrase replacement में you will have lot of questions from parallelism, from conditional sentences. So, if time permits, I will show you some conditions. How do they ask in parallelism based का questions? चल, एक चीज मैं बता दूं. Listen, if someone is not aware of rule of parallelism, वो है level 1. If someone knows what is rule of parallelism and how to locate error, how to identify, how to replace phrase,
दैट इज लेवल 2। एंड लेवल 3 में कंडीशंस वेयर पैरेललिज्म फेल्स मिजरेबली, यानी रूल ऑफ पैरेललिज्म क्या है, इंप्लीमेंट नहीं होगा। वो है लेवल 3 का कॉन्सेप्ट, जो मे बी आपको आगे में कुछ क्वेश्चन दिखेंगे लेवल 3। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। Remember, as I told you, if you have to solve question in 30 seconds, you have to bother about keywords. इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, which is a keyword, है ना, which is a keyword. which किसको इंडिकेट करता है, which is called relative pronoun. ये इंडिकेट कर रहा है जीएसटी को, जीएसटी को। जीएसटी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पे वर्ब तो करेक्ट है, which is to accelerate का मतलब it talks about future, but since this is already implementations, it is implementing, it's already implemented, तो इस केस में it has to be in क्या, continuous form. तो which is to accelerate is bit ना, it seems incorrect or it is avoidable, तो it has to be in क्या, continuous form. लेकिन if you see there are two options which say in continuous form, एक है which is accelerating, एक है which are accelerating. Since my subject is singular, तो it can't take plural verb are. तो ऑप्शन 3 जो है ये डंप हो गया, बिकॉज यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लूरल है। ऑप्शन सी में वर्ब क्या है, इज है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इट इज डिस्क्राइबिंग जीएसटी, तो वो वर्ब क्या लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 2 है, तो ऑप्शन 2 जो है इट विल रिप्लेस द क्वेश्चन। याद रखो एग्जाम में थोड़ा सा आपको क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड यू हैव टू गो थ्रू। आई हैव सम वीडियोस जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन मैंने एक्सप्लेन किया है, ये एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट्स है, तो मेक श्योर यू रीड इट प्रॉपरली। चलो let us look at next question. Sentence says, since the past 20 years, thousands of magnificent United States AMs have been killed. ये it's a based on, याद रखो since is your keyword. since क्या है, since आपका keyword है, since is a keyword. since indicates starting time. since क्या इंडिकेट करता है, starting time. और since के साथ ड्यूरेशन नहीं आता, बट इफ यू लुक since के बाद क्या है, the past 20 years, ठीक है, इट मीन्स whenever since is followed by duration, वो क्या होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। तो ये फ्रेज भी इनकरेक्ट है, और जो ऑप्शन में since के बाद क्या है, ड्यूरेशन है, वो भी इनकरेक्ट है। यहां भी क्या है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। अच्छा, सेकेंड थिंग, यहां पे इंडिकेशन है हैव बीन, इट मींस ड्यूरेशन इज गिवन, तो ड्यूरेशन में ड्यूरिंग जो है ये फ्रेज अप्रोप्रिएट है, तो करेक्ट फ्रेज जो रिप्लेस होगा वो होगा ड्यूरिंग द पास्ट 20 years thousands of magnificent United States AMs have been killed. तो दिस इज हाउ, रिमेंबर सिंस के बाद क्या होगा, ड्यूरेशन इरेलेवेंट है, नहीं होगा। तो दिस इज हाउ दे आस्क यू क्वेश्चंस इन फ्रेज रिप्लेसमेंट। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, The new biography of Thomas Jefferson contains some startling insights. Startling का मतलब surprising. About the man who was the primary author of the Declaration of Independence. तो examiner what they do, they will underline this part. ये part को क्या करेगा, underline कर देगा।
रिमेंबर इनसाइड जो फ्रेज है ना, इनसाइड, इनसाइड इज नॉट फॉलोड बाय प्रीपोजिशन अबाउट, ठीक है। इनसाइड ऑलवेज टेक्स प्रीपोजिशन इनटू, तो दैट्स व्हाई ये फ्रेज क्या है, दिस फ्रेज हैज टू बी रिप्लेस्ड, दिस फ्रेज हैज टू बी रिप्लेस्ड, क्योंकि यहां पे इनसाइड के बाद प्रीपोजिशन अबाउट नहीं होता, इनटू होता। अच्छा, तो ऑप्शन ए इरेलेवेंट है, नाउ वी हैव ऑप्शन बी सी डी, सब में इनटू है। into the man, so remember they are talking about character, ठीक है। insight about the man who was the primary author, remember here you have into the character of the man, ये है into the character of a man, there is difference of क्या, article, a indicate indefinite articles और the indicate क्या, definite article। तो रिमेंबर वेन एवर, ये हु देख रहे हो, हु इज कॉल्ड, हु क्या कहलाता है, हु इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज टेक्स आर्टिकल द, दैट इज डेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल द। तो दैट्स व्हाई you can't replace this phrase with a man, बल्कि क्या, the man, why, because it is followed by क्या, relative pronoun who। तो इसको जो रिप्लेस करेगा वो जहां पे the man है into the character of the man, वो ज्यादा रिलेवेंट। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन देख लो जल्दी से। Look at question 7. So I have compiled questions in such a way that you come to know the relevance of questions. It means same although might be used in different forms in sentence. So you should be aware कि what is the composition of questions when they ask certain keywords. Remember, although के बाद conjunction yet लगेगा बट कभी भी नहीं लगेगा। तो sometime phrase replacement में when you have questions based on although, तो वहां पे conjunction क्या यूज करेगा, but यूज करेगा, जो कि irrelevant हो जाए। Although completely withered, the botanists were able to conclude from what remained on of the flower that the species was very rare. So when you try to, the problem is why should you replace this? ये this is called informal English। क्या है, informal English है। यहां पे the botanist were able to, were क्या इंडिकेट कर रहा है, past। It means first part has to be in also past। And remember ये जो withered है ना, it means dried completely, it seems like a form of passive or informal, so you must need the simple past form of simple past, main active or passive voice only। then if you remember initially आपने क्या डिस्कस किया था, रूल ऑफ पैरेललिज्म, जहां पे दोनों पार्ट क्या है, सेम पैरेललिज्म में रहेगा। तो यहां पे वर एबल है, ये पास्ट इंडिकेट कर रहा है। एंड इफ यू केयरफुली लुक एट दिस, ऑप्शन डी में although it was completely withered, समझ रहे हो,
तो ऑप्शन डी में भी क्या है, उन्होंने प्रॉपरली इसको क्या किया है, पैसिव वॉइस में लेकिन सिंपल पास्ट में कन्वे किया है। तो इफ यू लुक एट द रूल ऑफ, और ये जो चीज है ना, ये जो है कंप्लीटली विदर्ड, समटाइम ये इनफॉर्मली यूज होता है। फॉर्मल वे में क्या है, वेयर यू शुड हैव बी वर्ब, वॉज क्या है, वॉज है बी वर्ब, और विदर्ड है V3। अब ये हो गया प्रॉपर पैसिव वॉइस। क्या हो गया, पैसिव वॉइस। इस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब क्या था, मिसिंग था। तो दिस इज हाउ दे आस्क यू क्वेश्चंस। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी वर्ब प्लस V3। व्हाट एग्जामिनर्स विल डू, दे में रिप्लेस वन बी वर्ब को रिमूव कर दिया, दे आस्क यू टू रिप्लेस द फ्रेज। So make sure you take care of certain concepts of grammar well before you practice क्या, questions of phrase replacement.